Hello everyone, welcome to AptiPlus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the news with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 1st of March and these are the list of the topic. First is ISRO put Amazonia 1 and other satellite into the orbit. The second is PM call for the water conservation drive. Third, CSIR lab helped develop the key molecules for the Covaxin. Their role cannot be denied. They have definitely done a commendable job. The second last topic is center grant clearances of forest land for the Goa project. And the last is ignite the desire to learn. So this is an editorial which will be discussed in detail. Apart from this, there is some MCQs question that is relevant for the upcoming prelims examination. So do check that you practice some question and get benefit out of it in the upcoming prelims examination. So without any further ado, let's get started with the first news. That is ISRO put Amazonia 1 and other satellite into the orbit. So talking about the relevance, definitely it is very important for your prelims examination. And at the same time, talking about the gender studies paper in the mains, it is relevant for the gender studies paper 3, achievements of India in the science and technology. So let's see what are the details from this news. So milestone has been achieved by the Indian Research ISRO, जो है हमारे Indian Space and Research Organizations. So they have successfully launched Brazil Optical Earth Observatory satellite known as Amazonia 1 and 18 co-passenger satellite. So along the Amazonia, there was other 18 co-passenger satellite that was launched by the ISRO. And these include 5 from India and 13 from the United States. और ये सारी चीज़ें जो हुई थी, जो सेंटर्स यूज़ की गई थी, दैट वाज फ्रॉम श्रीहरिकोटा धवन सेंटर. श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन सेंटर्स है वहाँ से इनको द एंटायर प्रोसेस, द एंटायर लॉन्चिंग प्रोसेस टुक प्लेस. Now talking about the PSLV 51, this is again a landmark. आपको ये याद रखनी है कि कौन सी launch vehicle use की गई थी. It is very possible that UPSC can also ask you. If not, there are many other competitive examination. They're gonna ask you this question कि कौन सी launch vehicle use की गई थी. So satellites carried the broad of PSLV C51. And this is the 53rd flight by the ISRO that was launched using this vehicle. तो PSLV C51 भी इस बार यूज किया गया और ये 53rd टाइम था जब इसरो ने इस तरह के PSLV C51 को यूज किया था. So this is for 53rd time, right? And this is the first dedicated mission to its commercial arm, New Space India. जो इसरो की commercial arms हैं, New Space India, उसके साथ ये mission dedicated थी commercially. Now the mission was undertaken under a commercial arrangement with Space Flight In, जो कि US की है. और PSLV C51 की बात करें, so this is equipped with 2 solid trap on the boosters. So this is again a significant and static point for the prelims examination. Now talking about the Satish Dhawan Sat, इस satellite को जो launch की गई है, so this is Satish Dhawan from India. This is Satish Dhawan Sat, also known as SDSat. This was built by the Space Kits India. As you know, space sector में जो private companies हैं उनको allow किया गया. Even the foreign direct investment has also been increased. तो ये एक nano satellite है that intended to study the radiation level, space weather, demonstrate long range communication technology. And UnitySat is again the combination of 3 satellites that provide radio delay services पहला and another level belonging to the DRDO. So Satish Dhawan Sat is again a significant point. यहाँ पे आपसे direct सवाल पूछे जा सकते हैं. And the very possible reason for asking this question is because this was being built by the Space Kits India. This is a private organization. आप इसके बारे में इसका websites पे visit करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं. So do check the websites spacekitsindia.com. Now talking about SDSat, this is an engraving for the Prime Minister. He was of the opinion कि इस तरह से solidarity जो आत्मनिर्भर initiatives है space में privatization करने की. So this shows कि we can achieve a landmark achievement if we initiate a process where the private partners is also taking place. But that should be kept in mind कि यहाँ पे जो private players को हम बुला रहे हैं, that should not only come for the sole profit making, right? Why people are protesting for the big enterprises like Reliance, Adani and other people? Because they are more
और इनटू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, राइट। कोई नए स्टार्टअप भी अगर प्राइवेटाइजेशन को हम मौका नहीं देंगे, जो नए स्टार्टअप है, नई ब्रेन है, नई टेक्नोलॉजी है, दैट वुड नॉट गेट अ प्लेस इन इंडिया एंड सो देयर एक्चुअल पोटेंशियल। सो जो सही चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं वो बहुत बड़ी कंपनी की इसकी बैकिंग हो, नई स्टार्टअप्स भी या फिर जो ऐसे लोग इसमें डेडिकेटली काम कर रहे हैं, डेफिनेटली दे शुड कम थ्रू द प्राइवेट मोड। तो इफ़ यू बीइंग आस्क्ड, अगर आपके ओपिनियन पूछा जाए मेंस एग्जामिनेशन में और ईदर यू आर बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यू, so you can share this type of opinion with the panel. Now this is what we have discussed. This is a recap. So 13th satellite जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, Amazonia 1 and other satellite, जिसमें 13 satellite थी US की, 5 was from the India, and this was the 78th mission of the श्रीहरिकोटा, जो श्रीहरिकोटा से जितनी बार लॉन्च हुई, 78th बार ये लॉन्च हुई। And ISRO has till date launched 342 foreign satellites from 34 countries. So this is again a landmark achievement. This is a fodder point for mains examination. And Amazonia 1 with a mission of life 4 year and will monitor the deforestation on the Amazonia region. So this is all about the recap, and the first is the first dedicated satellite launched by the SpaceX Limited, and 53rd flight from the ISRO workshop on the PSLV C51. So this is a quick recap. If you're having the newspaper, make sure you take you cut this picture. This will be again relevant, or either you can take screenshot of this image. Now coming to the second news, PM's call for the water conservation drive. This is important for your environment section also, but this would be more relevant for the inclusive growth and issues rising from it. And precisely talking about its important, it is relevant for the जनरल स्टडीज मेंस पेपर। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रीसेंट मन की बात में, जो एक रेडियो एड्रेस है, ही सेड देयर इज नीड टू कंजर्व द वाटर इन राइट वे एंड राइट डायरेक्शन, एंड द जल शक्ति मिनिस्ट्री, जिसको डेडिकेटली इस पर्पस के लिए बनाया गया है, दे शुड बी लॉन्चिंग 100-day कैच द रेन कैंपेन, बिकॉज soon the monsoon is going to start in coming May June time. So in that particular time, initiative is again has to be started that will be named as catch the rain. So prime minister is of the opinion that definitely we need to look into the water conservation efforts where the water level जो है, हमारे ground water level जो table है, उनको maintain किया जा सके, and this is coming from the prime minister. I think this has already been delayed. ये इस तरह की initiative काफ़ी पहले start हो जानी चाहिए थी इंडिया में। We know हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कुछ और होती है, डेफिनेटली अभी आई है, देर आए दुरुस्त है, बट लेट्स सी हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प। Now catch the rain initiative in most part of the India, अगर बात करें रेन की, that start from May to June. This is a time of monsoon where mostly the rain, entire India figure out rain जहाँ पे होती है, and can we right say that 100 days campaign जो है can save a lot of water, right? Conserving water को लेकर की effort की गई है। जो जल शक्ति अभियान है, that will catch the rain and begin initiated by the Jal Shakti Ministry. And one of the another significant efforts that government did, I personally feel that they have formulated and they have made a separate ministry known as Jal Shakti Ministry. This is again, this shows the dedication efforts, ठीक है, एक basically एक positive attitude है गवर्नमेंट की towards the water conservation. But ये जो campaign है, they should be more successful. No, definitely participation from us is also required. So you and I can definitely make contribution in these initiatives. So catch the rain, right? This is initiative and अगर बात करें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। नाउ सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात की गई है। फॉर मेकिंग इंडिया मोर सेल्फ रिलायंट, द प्राइम मिनिस्टर सेड इट वाज नॉट जस्ट अ बिगर थिंग, because we already had made missiles, air tank, metro trains, and other achievements had already been done for India. So conserving water with 100 days campaign is not a big task. And he cited some examples because he was addressing. So he addressed the Man Ki Baat, in that he has a various dimension that he used to cover. So he talks about the chia seeds production that is coming to India. This is indigenously cultivated in India. And he quoted about the Uttar Pradesh where the chia seeds is getting produced by the local farmers. So it shows our dedications, India's self-reliance that we can achieve in the coming years down the line in terms of manufacturing, defense, agriculture, and other core areas. Now the other news from the Hindu, CSRI lab helped develop key molecules for the Covaxin. So the vaccine Covaxin which was being developed, this is being developed by the Bharat Biotech, as you know,
भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया है, तो उसमें CSIR की जो लैब्स हैं उनके काफ़ी रोल्स रहे हैं. सो अगेन वेरी मच important for the prelims examination point of view, and this is again relevant for the general studies paper 3 in the mains examination in science and technology developments in their everyday life. So the Indian Institute of Science and Technology, also known as IICT, a Council for Scientific and Industrial Research, ये दोनों ने मिल करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल दिया. इंडिजिनसली वैक्सीन जो डेवलप की गई थी भारत बायोटेक, कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक, and these two institutions, IICT and CSIR, has made a huge contribution in developing this vaccine. So the vaccine is highly purified. होल वेरिएंट की अगर बात करें, इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 की उसमें एन्यूनेटेड वायरस डाली गई हैं, एंड द वैक्सीन हैज बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग Alligal IMDG, right? So these are the process, these are the method, these are the chemical they were used while manufacturing the Covaxin. और बात करें अगर इस तरह की इंडिजिनसली डेवलप्ड मॉलिक्यूल की, दे हैव डेफिनेटली एडेड द भारत बायोटेक टू स्केल अप द प्रोडक्शन. सो विद द एफर्ट्स वेयर CSIR and IICT has made a collaboration, and their efforts has made Bharat Biotech to produce more and increase their productivity and give the large mass productions of the vaccine that is required at this point of time. Now स्विफ्ट प्रोसेस की अगर बात करें, सो IIC के डायरेक्टर ने कहा था कि उनकी जो पूरी टीम है, दे आर वर्किंग ऑन द केमिकल प्रोसेस टू रिकॉर्ड अ 4-month डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल मेथड्स टेस्टिंग द TLR7 और 8 के जो एडजुवेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको. So I'm not getting into the detail of this molecule because this is not going to be asked either in the mains or in the prelims examination, but you should know कि किस तरह की चीजें न्यूज में थी, so that अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाएं. I'm talking more precisely about prelims examination. And IICT also get the method validation procedures for the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, also known as LABL. तो आपने देखा होगा कहीं भी आप टेस्टिंग करवाने जाओगे तो वो लेबोरेटरी NABL accredited होती है, उनको सर्टिफिकेशन मिलती है कि दे आर एलिजिबल टू टेक ऑल द बेसिकली टेस्टिंग प्रोसेस. सो दिस इज अ नोडल बॉडी. आप NABL के बारे में थोड़े से पढ़ लें, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अबाउट अस का जो पेज होता है, वेयर यू कैन विजिट दैट. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, किसी भी ऑफिशियल साइट के अबाउट अस पेज इज गिविंग यू मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दैन यू रीडिंग एनी अदर ब्लॉग्स, राइट? सो मेक श्योर यू गो बाय द ऑथेंटिक कंटेंट, बिकॉज समटाइम्स UPSC टेंड टू आस्क क्वेश्चन और वहां से कई बार स्टेटमेंट पूछे जाते हैं डायरेक्टली. Now towards self-reliance India, how this efforts has made India taking a roadmap towards the self-reliance. According to the Bharat Biotech chairman, ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें CSIR और IICT ने मॉलिकुलर में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्लेइंग फील्ड दी कोवैक्सीन बनाने में. सो दिस इज इंडियाज कमिटमेंट और CSIR की कमिटमेंट है एक भारत, आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस इंडिया की तरफ. And CSIR lab, apart from helping pharma industries, has launched repurposed drugs, जहाँ पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, extensively contributing towards the diagnostic of Feluda. We have already discussed Feluda in our DNA. So Feluda was the paper testing that was being done. And this is very significant कि इंडिजिनली इस तरह के जो टेस्ट हैं उनको डेवलप किया गया था, and it was only possible with the efforts from the CSIR and IICT, right? और जो PCR स्वैब टेस्ट हैं, ये सारे चीज़ों को बेसिकली CSI और IICT की मदद से भारत बायोटेक ने जो मॉलिक्यूल बनाया, जो कोवैक्सीन बना, उसकी प्रोडक्शंस में भी काफ़ी हद तक मदद मिली. Now coming to the other news, that is center grant clearance for the forest land in the Goa project. This news has been reported in Indian Express, and this is important for the General Studies paper 3, conservation, environmental pollution, degradation, and EIA, that is environmental impact assessment. So recently जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change है, उन्होंने क्लियरेंसेस दी हैं. खास करके जो क्लियरेंसेस मिली है उसमें कुछ प्रोजेक्ट को डाइवर्ट किया गया, डाइवर्जन ऑफ 140 hectare of forest land in the South Western Railway double tracking project that was amid because of the protester, because of the environmentalist. तो environmentalist ने प्रोटेस्ट किया कि तो अभी जो प्रेजेंट साइट है उसको चेंज किया जाए, वहां से माइग्रेट करके दूसरे जगह कंस्ट्रक्शन की जाए, because that would be impacting the environment a lot, and at the same time it would severely impact the wildlife sanctuary and the basically जो conservation forest है उनको. So let's see what are the other details. So the local and the expert are of the opinion कि they were of the plan to cut the भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में लोकेशन देख ले, because if there is a news, a very possible chances that it can be there in the prelims examination.
right? So and the Molim National Park in South Goa, right? So the environmentalists and the people and the stakeholder were concerned with regards to these two wildlife sanctuary and national park. And environmentalists have been opposing three linear projects. वो जो तीन important projects थे, first include the double trekking project, second is four laning of the national highway, and third is Goa Yanmar transmission power projects. So they have asked the government, they were protesting कि इन चीज़ों की जो लोकेशन है, जो साइट्स है, उनको चेंज कर दिया जाए, बिकॉज दे वुड सीवियरली इम्पैक्ट भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क इन साउथ गोवा. नाउ सेव मोलेम मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट. आप यहाँ पे चीज़ों को समझ लें. सो द गोवा फाउंडेशन हैज बीन एज द फोर फ्रंट इन द सेव मोलेम मूवमेंट. दे हैव गैदर्ड द मोमेंटम लास्ट ईयर ओनली बिकॉज ऑफ द वेक ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड. और दे सेट कि द प्रोजेक्ट कुड कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, जो उनको प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न घाट में वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है. गिव नो बेनिफिट्स टू द लोकल रेसिडेंट वेयर दे एम्स टू एक्सक्लरेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल and Muruggo port in the Karnataka. So Save Molam is again, they're definitely in the news, but because of the COVID-19, this movement was struck, and now after the unlocking process, they are trying to save this movement, and at the same time, they are ensuring कि जो wildlife है उस area में उनको पूरी तरह से conserve किया जा सके, right? Now the last editorial talks about ignite the desire to learn. This is there in the Hindu. And if you talk about this, this is important on the aspects of science and technology as well. Science and technology may be important, but it would be more relevant for inclusive growth and development. So let's see what is the details coming out from this editorial. So according to the early conservation estimates, बात किया रहे अगर यूनेस्को की, तो जो पेंडेमिक है उसके वजह से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आउट ऑफ स्कूल होना पड़ा. और मैं पूरे एडिटोरियल की अगर आपको थीम बताऊं तो इस एडिटोरियल की जो पूरी थीम है कि किस तरह से टीचर्स को इनकरेज किया जा सकता है फॉर बेटर लर्निंग आउटकम. विल सी दैट डिटेल वन बाय वन, बट लेट्स सी द क्रोनोलॉजी ऑफ द एडिटोरियल. और इसमें यह बताई गई है कि जो इंडिया के जो स्कूल में ड्रॉप आउट की अगर आप रेट देखें, सो इट इज़ एविडेंट एंड सजेस्ट कि पेंडेमिक के बाद क्या इसको अंडू करना इतना पॉसिबल होगा, या इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, द सिविल सोसाइटी एंड द पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड इंश्योर कि जो पार्टिसिपेशन हुई है बच्चों की वो वापस से आ सके प्री कोविड लेवल्स पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन स्कूल ओपन द प्रॉब्लम ऑफ पुअर लर्निंग आउटकम, बिकॉज जो लर्निंग आउटकम है इंडिया में वो काफ़ी पुअर है. द एम्यूनिटीज, द टीचर्स, द क्वालिटी दैट दे आर गेटिंग इज नॉट पार द लेवल ऑफ द अदर मेट्रो सिटीज और एनी अदर कंट्री, राइट? So definitely we need to encourage, enable and enthuse the teacher so that they can have better learning outcomes. So how that is possible, what can contribute to it, we're going to see that. So कुछ lessons हमें learn करने की ज़रूरत है from the IT sector. So the Indian IT industry was built to innovate idea. Definitely technology is built to ensure कि जो आपकी जो level है उसको ऊंचा किया जा सके, उसको explore किया जा सके, उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके. This is why we are using the IT, right? And the process of designing, thinking, innovation, that is the few critical questions that need to be started. So the first question that is being asked is whether it is a value zone where learning outcome can happen. This is the first question from the IT sector, and the answer is the interface of the teacher and the children, right? जिस तरह से classroom है, classroom में चीज़ें चल रही हैं, क्या उसको हम और अच्छा improve कर सकते हैं, जो interaction है उसको और अच्छे कर सकते हैं. The second question is who creates the learning value zone? कौन लर्निंग वैल्यू जोन में क्रिएट करता है? इसमें टीचर्स इज द ओनली पीपल हु कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, राइट? सो टीचर का खास करके वेल एक्सेस टू नॉलेज, वेल एक्सेस टू इक्विपमेंट्स, वेल एक्सेस टू इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And in that case, what should be done that to enthuse, enable and encourage teacher is very important. So we have to take the advantage of technology, making school getting fund properly so that जो learning process है उसके बीच में किसी तरह से barrier ना पाए. Now, what we can do? No, what are the efforts that government need to do? What are the efforts that civil society need to put upon? So definitely, what will take to make the teacher learning easy? That is the most critical part, and this is possible if we map the teaching and learning lifestyle. Right?
हमें मैप करने की ज़रूरत है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को फोकस करने की ज़रूरत है. द फर्स्ट बीइंग द गवर्नमेंट नीड टू क्रिएट अ गेम चेंजर डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट, दैट इनेबल्स टीचर एंड चाइल्ड टू स्टे कनेक्टेड थ्रू वर्चुअल क्लासरूम इवन आफ्टर द स्कूल. स्कूल के बाद भी अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो वर्चुअली वो किसी एक तरीके से चैटबॉट या किसी एक मेथड्स के थ्रू कनेक्ट हो सके अपने टीचर्स के साथ. दैट वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट. The second is free platform that should not be used for teaching, but for sharing and ensuring the interest in learning continues even in the home also. And the last is the critical aspects of learning to first ignite the desire to learn and rest with the fellow. So this is very significant कि जो contribution है overall education sector में that is going to be there. और इसके साथ साथ ये देखने की जरूरत है जो interaction level है teachers और बच्चों के बीच में, खास करके स्टूडेंट्स के बीच में, दैट शुड बी टू एंड फ्रो, राइट. उसके बीच में कोई हिंड्रेंस होगी तो लर्निंग प्रोसेस में बहुत हद तक ब्रेक लग सकती है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, द गवर्नमेंट शुड डू. दीज आर द एफर्ट्स दैट शुड बी डन फ्रॉम द गवर्नमेंट. Now moving to the MCQs question, as you know that we have shifted our MCQs question to the current affairs because that is a need of the hour. आप इस टाइम पे जितने भी current affairs revise कर ले, that would be very important, right? So this is more or less compared to current affairs and environment. So consider the following statement about the Bhitarkanika National Park. So this is located in the estuaries of Brahmaputra river system, and it houses 70% of the country estuarine on saltwater crocodiles. So what you have to do, you have to just choose the correct option, whether 1 is correct, 2 is correct, both 1 and 2 is correct, or neither 1 nor 2. So whatever you feel is the correct answer, use your basic skills that you can use in this question and write your answer in the comment section down below. Coming to the second question, consider the following statement with regard to Council for Advancement of People, Action and Rural Technology, also known as CAPART. So it is an autonomous body set up under the Ministry of Tribal Affairs. So this is a nodal ministry which you have to consider whether it is correct or incorrect. And the organization seeks to improve the quality of life in the rural areas, right? Again, the same option has been provided and you have to choose any one of them. So do participate, write your answer there in the comment section. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, you find this video to be helpful, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.